लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ एसे 200। देखो एसे 200 सबसे पहले नेम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसे। क्योंकि ऑडिटर कौन करेगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए सबसे पहली बात तो ऑडिटर, और उसको किस अकॉर्डिंग में करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग। और अब सबसे पहले जो ऐसे 200 है वो किसकी बात करते हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या, इससे क्या बढ़ता है, यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और किसके लिए होता है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, and it's prepared on all material aspect, and in that financial statement are prepared in accordance with the AFRF. And general responsibilities of independent auditor are as per standards on auditing, responsibility on auditor and management के ऊपर इसने साफ लिख रखा है कि मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब फाइनेंशियल के ऊपर मैनेजमेंट की वो नहीं है, ओपिनियन ऑडिटर को इशू करना है। तो मतलब ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी वहां पे in the case of preparation and presentation of financial statements, but auditor has a responsibility to issue opinion in case of financial statement, and that's also reasonable assurance, not the absolute assurance. And for the purpose of reasonable assurance, he has to get the audit evidence that should be sufficient and appropriate. That means SAE he has to obtain to get them to express reasonable assurance and that the financial statement are free from material misstatement. And what are the ethical requirements in case he has to maintain professional skepticism, and he has to do professional judgment and obtain SAE and audit, and has to reduce the audit risk. And if there is any failure to achieve the objective, then क्या वहां पे हम चेक करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं है, दैट रिक्वायर्स ऑडिटर टू मॉडिफाई द ओपिनियन और विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। कि अगर ऑडिटर ऊपर ये मैटर्स है वो ऑब्जेक्टिव को रीच नहीं कर पा रहा, तो ऑडिटर को हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट मैटर क्या है वहां पे, और ये ऑडिटर को कहीं मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है या विड्रॉ की तरफ। आगे जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, अगर विड्रॉ की तरफ है तो एप्लीकेबल मतलब अथॉरिटी के ऊपर भी हमें, मतलब रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उनको हमें इंडिकेट करना होता है, रिपोर्ट इशू करनी होती है। एज इन केस ऑफ सेबी एलओडीआर वी हैव टू inform them to SEBI. So this is general overview of the SA 200. Now let's dig into this. Now firstly, SA 200 deals with explaining the nature and scope of audit designed to enable the independent auditor to meet these objectives. क्या objective के meet करने के लिए independent auditor है कि ऐसे डिजाइन किया गया वहां पे कि नेचर एंड स्कोप डिजाइन करेगा। Essays are to be adopted as necessary as circumstances when applied to audit of other financial information. कि यही अगर यही हम सेम कर देंगे अगर हम अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑडिट कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ नाउ एसे 200 नाउ, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि हम ऑडिटर है वो अपनी फाइनेंशियल पे इशू करेगा ओपिनियन, सो दैट टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द इंटेंडेड यूजर्स, व्हाट ही हैज टू डू, mostly general purpose financials opinion in respect of whether financial statement present fairly in all material respects and give true and fair view on account with framework. कि वही है कि true and that the financial statement or like should be in all material respects and should give true and fair view. And what's the next purpose in case of auditor opinions does not assure future viability of the entity nor efficiency or nor effectiveness with the management conducting affairs of the entity. कि ऑडिटर है मतलब ओपिनियन ये इंश्योर नहीं करता कि वो फ्यूचर वायबिलिटी की तरफ ऑफ द एंटिटी की वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन कर पाएगी। वो कहता है कि बस हम ओपिनियन करंट ईयर फाइनेंशियल पे हम दे रहे हैं वहां पे कि वो कैसे है, फ्यूचर वायबिलिटी पे हम नहीं दे रहे कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, वो हमें चेक करना होता है, लेकिन उसकी फ्यूचर वायबिलिटी पे कोई ओपिनियन इशू नहीं कर रहे। नेक्स्ट, ऐसे डज नॉट इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एंड डू नॉट ओवरराइड द लॉज एंड रेगुलेशन दैट गिवन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो ऐसे है वो किस पे है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर पे है। एंड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो तो मैनेजमेंट तो ऑडिट कर ही रही एंड ना वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, सो एसेस डजंट अप्लाई टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एंड डू नॉट ओवरराइड लॉज एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द रिस्पांसिबिलिटी। मतलब कैसे कि लिस्टेड एंटिटीज के केस में वहां बोर्ड जो बीओडी होते हैं उनको रिस्पांसिबल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले डाउन के लिए, आईएफसीज के लिए, मतलब प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए, फॉर दैट दे आर रिस्पांसिबल, नॉट एसेस आर डोंट अप्लाई टू देम। एंड नेक्स्ट, management or like it's the responsibility of management to provide the auditor with the all information, records and documentation that are relevant in preparation and presentation of financials. Next, any additional information that auditor may request, कोई भी additional information require होगी। And last, unrestricted access to all the within the entity, मतलब auditor किसी के साथ भी discuss करना चाहता है, whom auditor determines is necessary to obtain audit evidence, means इसकी short form क्या होगी, AAU, all the information, additional information and unrestricted access, AAU. Management, it's the responsibility of management to provide all information, additional information that is requested by auditor, and unrestricted access to all within the entity from auditor determines to obtain the audit evidence.
अब नेक्स्ट, अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को कैसे कर सकते हैं? बाय डिटरमाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेज आर नेसेसरी. लेट मी जूम इन समवॉट. कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने होते हैं ना अपने, जो उसके एसेस के लिए नेसेसरी है वहां पे, so that he can do the achieve its overall objective. And how further evaluating the SAE sufficient and appropriate audit evidence, and if he is able to do, then that's he is achieving overall objective. But if he is not able to do, then further he has to examine the further relevant evidence. It means additional evidence he has to see, and extended work perform. कि अगर वो ऐसे ही नहीं obtain कर पा रहा properly, so further he has to perform extra work for his audit is to be extended and performing other procedures. And if he is able to do this, then that's relevant and he will achieve the overall objective. But if that is impracticable, then he has to seek the impact on the audit report now, that whether he has to modify the audit report or not. Now moving to next, they are responsible for means who are responsible for. Management are responsible for identification of AFRF in context of relevant laws and regulation. कि उन पे कौन सा law financial framework applicable है, Ind AS, AS or any other. Next, preparation and presentation of financials in accordance with the framework. कि इनका कौन सा division apply, division 1 or 2. From relevant they will make the financials. Third, adequate description of the financial in their framework in the financial statement. क्योंकि अपने financial में notes में लिखना पड़ता है ना कि वो उन्होंने क्या prepare किया है as per Ind AS or AS. So whether they are providing adequate description of that framework or not. Now next, financial statement prepared in accordance with framework to meet. कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग मीट भी करनी चाहिए. बट कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स. कि जो कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑडिटर मींस जो इंटेंडेड यूजर्स को रिक्वायर्ड है, दैट आर आल्सो वाइड इन नेचर, दैट आर टू बी प्रोवाइडेड, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड और नॉट. एंड नेक्स्ट बी पॉइंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स. In case of specific purpose financial statement, we will deal with an SA 210 also. Special purpose financials means some जनरली बताएं, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे जो मैनेजमेंट, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम फाइनेंशियल स्पेशल पर्पस. मतलब कोई स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना रहे हैं वहां पे, मतलब कोई स्पेसिफिक उनका यूजर है वहां पे. जैसे अगर वो हो सकता है कि मान लो जो सब्सिडरी है उन पे एएस एप्लीकेबल है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन नाउ दे हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया. सो दैट मींस दे आर स्पेसिफिक यूजर्स आर देयर, दैट इन केस ऑफ पेरेंट कंपनी ओनली. Moving to next, where conflict exists between the financial reporting framework and sources from which direction or application has been obtained. कि अगर कोई framework और जहाँ से source को pick कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगी? Sources with the highest authority will prevail. कि मतलब जिसके पास higher authority होगी. If that in case with law and regulation, that will prevail over that. But if that in case of financial reporting framework is having the highest authority, and that will prevail. If there is any conflict, in case of conflict only, because if there is no conflict, then both will prevail in the respectively in the case. Moving to next, requirement of AFRF means applicable financial reporting framework. अब क्या हम चेक करते हैं applicability, in that will deal in SA 210. कि हम applicability चेक करते हैं ना वहाँ पे, acceptability कि वो मतलब हम audit engagement में बनाते हैं वहाँ पे लिख लेते हैं क्या acceptable as per framework बनाया है कि नहीं उन्होंने. And next, determining the form and context of financial statement. कि जो हम AFRF के according ही audit आगे चेक कर पाएगा कि उसका AS Ind AS applicable what has been applicable to them, and not specify how to account for or disclosure. कि अगर कोई disclosure provide नहीं किया या उनको account of कैसे किया है, मतलब ये specify नहीं करता है AFRF वहाँ पे कि how to account for such disclosure. Next, determining what constitute the complete set of financials. कि जो उनका AS1 या framework decide होता है ना वहाँ पे कि complete set क्या माना जाएगा. In the case of interim audit or like in case of annual audit, statutory audit, what has been applicable and what will constitute the complete set. कि means 5 set होते हैं ना वहाँ पे, cash flow, P&L, balance sheet and notes and additional information. तो वो सारी information provide की है. In case of interim, that's also less. Or like if there is any section 8 company, then in that case they are exempted from preparing CFS. Next, auditor requirement to obtain agreement or written representation for management. Auditor has to obtain as per SA 580 agreement and written representations. Next, SA is required auditor to obtain reasonable assurance. Only that means not the absolute assurance whether financial statement are free from material misstatement due to fraud or error or not. कि वो चेक करेगा कि reasonable assurance obtain करेगा. And reasonable assurance is what? High level of assurance. Not means not the absolute assurance. That is covered in third line also. That is not the absolute assurance because they are inherent, because there are some inherent limitations in audit.
And next, auditor has to obtain SAE to reduce the audit risk to an acceptable low level. So that's covered also now. Next, auditor will comply each requirement of SA. ये जो लास्ट में ऊपर ये लाइन लिख रखी है ये कि ऑडिटर को अपनी ऐसे में जो भी लिख रखा है उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, अनलेस कंडीशंस है यहाँ पे, मतलब कब नहीं कर सकता वहाँ पे, एंटायर एसे इज नॉट रेलेवेंट like SA 610, 620, if that's not applicable to them, so that they should not mention that. वहाँ पे लिख सकते हैं उन्हें हमारे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट नॉट रेलेवेंट एंड कंडीशनल, और वहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं थी वहाँ पे कि उनको फुलफिल करना है, मतलब एंटायर एसे इज नॉट रेलेवेंट और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एसे इज नॉट रेलेवेंट. एंड थर्ड, एक्सेप्शनल केसेस मीन डिपार्ट एज पर जजमेंट एंड परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स. कि मीन्स हम अगर कोई ऐसे 230 की बात करें वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे हम एडिशनल परफॉर्म करके भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब कोई एक्सेप्शनल केसेस में हम उसके वहाँ पे जजमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं वहाँ पे. दैट इज contained in essay that particular. Now, audit evidence should be that should support the auditor's opinion and report. मतलब जो auditor opinion issue कर रहा है उस पे audit evidence उसके support करने चाहिए उस auditor opinion और उसकी जो report में उसने issue किया है. And audit evidence should be in cumulative in nature. कि मतलब as an aggregate we have to check not on the basis of individuality. We have to check they are cumulatively relevant or not. Now, primarily obtained from audit procedures. कि हमें पता है कि हम ऑडिट प्रोसीजर से हमें ऑडिट एविडेंस मिलते हैं. इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, अगर हमने कोई प्रीवियस ऑडिट में कोई एग्रीमेंट या कोई पर्टिकुलर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट था वो कंटिन्यू है इस ऑडिट में भी, हम उसको कंटेन कर लेंगे. ऐसे ही फर्म क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, उनके फर्म की क्वालिटी कंट्रोल कैसे है उनके, वो कैसे मेंटेन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, फाइलिंग कैसे होती है, दैट इज आल्सो रेलेवेंट इन दैट केस. एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब जो एंटिटी हम पर्टेन कर रहे हैं उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे हैं, अगर दैट्स relevant or that they are complying with full controls, then that's will be the important source. Now, last, absence of information, management refusal to provide requested representation. वहाँ पे ऑडिटर को वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही बन जाएगा वहाँ पे कि एब्सेंस है, वहाँ पे कोई नहीं है. तो अगर हम जब भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे वहाँ कोई केएम या कोई अदर मॉडिफिकेशन करेंगे रिपोर्ट में, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हमने मैनेजमेंट से मांगा था एंड मैनेजमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड दैट इन्फॉर्मेशन. Now we have that with audit evidence now that should support the auditor opinion and report. And now what should constitute an sufficient and appropriate audit evidence? And this will deal with SA 500 in detail also, but now let's deal in this essay. Sufficiency means that is quantity, means quantity में अच्छा होना चाहिए वहाँ पे जो audit evidence obtain करें वो quantity wise अच्छा होना चाहिए. And that can be affected by assessment of RMMS, कि means risk of material misstatement, कि अगर रिस्क हायर है तो हमें ऑडिट एविडेंस भी हायर ऑब्टेन करने पड़ेंगे वहाँ पे, सो दैट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल. अगर वही इन वाइस वर्सा केस हो जाएगा वहाँ पे. एंड आल्सो अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस, क्वालिटी से भी होगा. अगर क्वालिटी मींस अगर जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं if its quality is high, then audit evidence we can reduce the audit evidence. Means हमें दिख रहा है कि मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कंट्रोल्स अप्लाई कर रही है उनके, and all the other things are good in case of controls, so that we can rely on their controls and we can see that their voucher like something that is good in quality, and we can reduce the audit evidence. And quality is dealing with appropriateness, and that means relevance and reliability, मतलब relevant or reliable है in the case, and that's are influenced by source and nature. And now moving to this point, assessment of risk is matter of professional judgment. कि जो assessment risk हम करेंगे ऊपर जैसे यहाँ पे बात की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जो हम असेसमेंट करेंगे जो हमारे फैक्टर को चेंज कर सकता है ऑडिट एविडेंस को, दैट्स द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर rather than matter capable of precise measurement. हम ऐसे कोई मेजर तो नहीं कर सकते वहां पे कितना रिस्क होगा, कितने परसेंटेज में हम करेंगे, दैट्स मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ओनली. नाउ आरएमएस दैट कैन बी ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड ऑन असर्शन लेवल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या हो गया, पूरे फाइनेंशियल पे हमारा रिस्क कैरी कर रहा है, और असर्शन लेवल कोई पर्टिकुलर जैसे पीपी की ऑडिट करें वहां पे कोई पर्टिकुलर रेलेवेंट assertion के ऊपर हमारा कोई वहां पे रिस्क है वहां पे पर्टिकुलर, that can be varied. Overall means previously to financial statement as a whole and potentially affect many assertion, and assertion level determine the NT of app necessary for SAE, means nature, timing and extent of further audit procedures necessary, most according check करना पड़ेगा. Now general limit statement including omissions are considered to be material. जो अगर कोई omissions हुई है वहां पे वो material तभी होगी if that is individually or in aggregate could reasonably expected to influence the economic decisions, कि यूजर्स के इफेक्ट कर सकते हैं वहां पे. अगर कोई गलती भी हुई है, ओमिशंस भी हुई है, कुछ भी गलती से भी हुआ है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज मटेरियल. कि वो कब होगा इफ दैट इज इंडिविजुअली एंड और एग्रीगेट कुड रीजनेबली, मतलब रीजनेबल से दिख रहा है वहां पे एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे कि वो
यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट विल बी मटेरियल, एंड देन वी हैव टू सीक द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट नाउ, if that is material misstatement, if there is any. Now moving to next, modify limitation of scope. Specific documentation requirement of relevant ऐसे provide evidence of auditor basis of conclusion about achievement of overall objective. कि documentation हमने हर ऐसे में करनी होती है जो हम evidence obtain करेंगे या further ऐसे will deal with. In that case also they are providing that specific documentation is required as per requirement of relevant essay. Essay 230 deals with audit documentation, but many other essay deal with audit documentation. What auditor has to document in as per that relevant essay, that has to be provided with to achieve the overall objective. C कि जो relevant essay में documentation provide की है वो भी हमें करने पड़ेंगे ताकि हम overall objective को reach कर पाए. Next, auditor opinion deals with the financial statement as a whole. Means वही auditor opinion ऐसे तो नहीं particular matter के लिए रहे, on we are giving opinion on financial statement. Therefore it is not the responsible for detection of misstatement and that are not material to the financial statement as a whole. If that materiality applied to that particular entity, and if that material level is not been crossing in the basis of individual or aggregate, then auditor is not responsible for detecting such type of misstatement. कि वहाँ पे फिर टाइम इनहेरेंट लिमिटेशंस बहुत क्रिएट हो जाएंगी, वहाँ पे फिर वो कर ही नहीं पाएगा. Now next, this essay requires the auditor exercising professional judgment. Means auditor has to exercise the professional judgment and has to maintain the professional skepticism throughout planning and performing the audit evidence. Means performing the audit. Now firstly he has to obtain, identify and assess the RMMS due to fraud. How will he obtain? As per essay 300, firstly he has to identify and assess the matters, and on the basis of that he has to design and implement the responses. Means essay 315 also dealing with planning and identifying and assessing the risk of material misstatement, and now on the basis of that essay 330 dealing with that, he has to design and implement such response to assess risk. And now further he has to form an opinion on financial statement on the basis of conclusion he has reached in earlier on the basis of audit evidence obtained, that is with essay 700 series. Now moving to next, communication and reporting responsibility to user of financial users, management and TCWG or other parties. Means essay 240 fraud or like 260 consideration of other laws that are applicable. Now in case of financial statement level, ordinarily complete set of financial statement are required by AFRF but can refer to single financial statement. कि हमें complete वो बात करता है लेकिन ordinarily, लेकिन particular हम single financials की भी बात कर सकते हैं, that is applicable of section 8 companies also that I mentioned earlier. Now what is professional skepticism? Main then audit attitude that include the questioning mind. Auditor को अपना questioning mind always he has to maintain that level, and he should be being alert to all the conditions that may indicate the possible misstatement due to error or fraud, and that is critical in assessment. See, critical assessment, possible misstatement should be there, and he should having a questioning mind. And ये नहीं है वो कोई गलत देख के चुप ही ना रहे, मतलब कोई observation निकाल के कोई questioning mind ना रखे. He should be of questioning mind and being alert to all the conditions that may indicate the possible misstatement. वहाँ पूछे management से. Now, code establishes following fundamental principles of professional ethics that is relevant to auditor when conducting audit of financial statement and should provide the conceptual framework for applying those principles. Means auditor अपने fundamental principles को follow करे वहाँ पे, and that are integrity, objectivity, professional behavior, professional competence and due care, and confidentiality. That the short form is COPI, COPPI. Confidentiality, objectivity, professional behavior, professional competence, due care, and integrity. COPPI. That's the short form of remembering that. Now, in addition to the code, requirement of compliance with relevant laws and regulation can be there. That is section 141 of Companies Act and section 144 that dealing with disqualification and some prohibited matters. Now, moving to next. Essays generally do not override the law and regulation that governing the audit of financial statement. ये एसेस को बनाया इसलिए गया कि हम लॉ एंड रेगुलेशन के हम साथ में कंप्लायंस करें, बट हमने जो ऊपर भी पढ़ा था, अगर if there is any conflict that remains still, in that case higher authority will prevail. Now additional responsibility may not deal with the in the essay and deal with the law and regulation. मतलब वो कोई चीज ऐसे में नहीं है लेकिन law and regulation में, that will prevail in that, and auditor has a responsibility in that case. Auditor shall not represent compliance with the essay in audit report unless auditor complied with the requirement of essays. Main line कि जब हम essay 700 की compliance करते हैं वहाँ पे हमें लिखना होता है auditor को अपनी report में कि we are complying with all the essays
we are in requirement with all the essays, we are complied with all the essays. अगर उसने कंप्लायंस नहीं की वहाँ, अगर उसने लाइन लिख दी तो बाद में वो केस आ सकता है कि आपने कैसे कंप्लायंस की वहाँ पे, आपको हमें दिख ही नहीं रही, ग्रॉस नेग्लिजेंस हमें दिख सकता है वहाँ पे. फिर प्रोफेशनल एथिक्स की क्लॉजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे वहाँ पे. ग्रॉस नेग्लिजेंस क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल कैन बी अप्लाइड टू दैट केस. Now, SA 220 sets the engagement partner responsibility with respect to relevant ethical requirements. Means generally in the case of any engagement partner is responsible for that engagement particularly, and with respect to relevant engagement or ethical requirements, including evaluating whether the member of engagement team, कि उसे evaluate करना होता है कि जो उसके members है team के, that are complying with the relevant ethical requirement, कि उनके members requirement को ethical requirement को fulfill कर रहे हैं नहीं कर रहे. In appropriate action if the matters comes to the engagement partner attention, कि उसने और engagement partner ने appropriate action taken care किया है कि नहीं. If that matters come to the that not complies with the relevant ethical requirement, कि members के कोई थे कि वो relevant ethical requirement को fulfill नहीं कर रहे थे, तो what's the appropriate action that has been taken by the engagement partner, that has to be checked. And after that, on the basis of that, he has to form the conclusion final. Now, maintaining the professional skepticism, that auditor should be alert to all the conditions, means audit evidence that contradicts with the other audit evidence obtained, कि जो ऑडिट कंडक्ट करते वक्त अगर कोई ऐसा एविडेंस मिला जो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का है, तो ही शुड बी अलर्ट इन दैट केस. नेक्स्ट कंडीशन दैट में इंडिकेट फ्रॉड के केस में ऐसे 240 भी अप्लाई होगा. फिर ऑडिटर को वहां पे अलर्ट भी रहना वहां पे ऐसे 240 कंप्लायंस एंड ऑल अदर रेलेवेंट रेगुलेशंस. थर्ड पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशनल टू दोस रिक्वायरमेंट बाय द एसेस, कि अगर कोई पर्टिकुलर ऐसे कह रहे हैं वहां पे एडिशनली कि ये भी आप चेक करो वहां पे ऐसे 240 है, वो बहुत चीज कहते हैं वहां पे, that should be compliant with, an auditor has to deal with that. Last point, information that brings into the question reliability of the document and responses, क्या वहां पे हमने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो उसकी और डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे आ रहा है. जैसे देखिए हमने कोई बात और वो एग्रीमेंट्स मंगवा रहे थे, फिर उनके पास आनी एकदम आ गया पार्टी से, मतलब हो सकता है दैट कैन रेज द क्वेश्चनिंग माइंड, मींस रिलायबिलिटी, कि वहां पे चेक कर दे कि कल एग्रीमेंट नहीं थे, आज रेज हो गए, नए एग्रीमेंट बन गए, एकदम कैसे बन गए. So that can bring into the question of the auditor. Now, professional skepticism done. Now, maintaining throughout the audit evidence is necessary. That professional skepticism is not a just one-time activity. He has to maintain throughout the audit evidence, throughout the audit, and to reduce the audit risk. And that should overlooking the unusual circumstances. वो कैसे कर सकते हैं? जो unusual circumstances है उनके पे carefully check रखे. ओवर जनरलाइजिंग अंडर ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, जब वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां स्केप्टिसिज्म रखे, मतलब माइंड रखे कि कुछ गलती तो ना हो रही नहीं हो रही यहाँ पे. एंड यूजिंग इनएप्रोप्रिएट असम्पशन इन डिटरमाइनिंग एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स, कि वो इनएप्रोप्रिएट कोई असम्पशन तो नहीं ले रहा कि मैनेजमेंट ठीक है वहां पे, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करते हुए वहां पे. दैट ऑडिटर हैज टू सीक मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माइंड. नाउ further that starting we have covered that he has to maintain the professional judgment and exercising professional judgment, maintaining the professional skepticism, and how he can exercise the professional judgment, that regarding with the decisions like materiality and audit risk, ऐसे 320 and audit risk, मतलब auditors को कैसे करें, materiality को कैसे करें. Next, anti of audit procedures to meet requirement of essays, कि वो कैसे meet करें वहाँ पे, anti वो कैसे decide कर रहे हैं. Next, evaluating SAE that has been obtained, कि ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर है या वो अपनी या कोई टीम मेंबर है, वो कैसे अपनी जजमेंट ऑब्टेन करें वहां पे कि एविडेंस को इवैल्यूएट करने के लिए प्रॉपर्ली, दैट इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट और नॉट. डी पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग एंटिटीज फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, कि अगर कोई जैसे इंडेक्स की बात करें वहां पे, अगर कोई फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात करी है तो वहां पे वैल्यूएशन की रिपोर्ट है कि नहीं है वहां पे, मींस और उन्होंने कैसे इस अमाउंट पे रीच किया. Auditor has to seek the judgment of the management also, and he has to evaluate that. Now, last point, drawing of conclusion based of audit evidence, कि आपने audit evidence के basis पर उसको conclusion पे draw करना है वहाँ पे, तो and that should how we can do that, assessing the reasonableness of the estimates, कि वो अपने estimates को reasonably मतलब assess करें वहाँ पे कि that is relevant or not. Now, moving to last now. Audit risk does not refer to audit business risk, मतलब ये audit risk है वो auditors का कोई business risk नहीं है वहाँ पे, like loss from litigation, adverse publicity, other event arising in context of audit of financial statement, मतलब कोई litigation से related है. Auditor business मतलब auditor risk नहीं है, but that can bring into that particular risk, मतलब ऐसे वो deal नहीं करता वहाँ पे कि audit risk क्या है वहाँ पे, auditor business risk.
तो मतलब वहां पे रेज कर सकते हैं, वहां पे कोई पर्टिकुलर एसर्शन को हिट कर सकते हैं वहां पे. Now, PJ, professional judgment needs to exercise throughout the audit and need to be applied appropriately and it should be appropriately documented. अगर उसने कहीं मेटिलिटी, जैसे अगर हम बात करें, जैसे उसने मेटिलिटी या ऑडिट रिस्क बनाया वहां पे, उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है. मेटिलिटी कैसे उसने सेट की वहां पे, कैसे लेवल को सेट किया, वो एंटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट कर रहा है वहां पे, कि दे आर कंप्लाइंग विद, तभी वो ऑडिट रिपोर्ट में लिख पाएगा वहां पे कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, उसने कैसे फुलफिल किया, तो हम कैसे मान लेंगे कि उसने इस ऐसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल की है. And that can be done through checklist also. Now, auditor is required to prepare audit documentation sufficient to enable an experienced auditor कि audit documentation वो ऐसे करे कि जो experienced auditor आए, जिसके पास कोई previous connection नहीं, मतलब उस audit से related कोई knowledge नहीं है वहाँ पे, लेकिन experience है वो, तो उसको understand हो रहा है कि वहाँ पे significant उसने judgment कहाँ obtain किया है, वहाँ पे कैसे लिए हैं उसको, तो उसका idea हो रहा है वहाँ पे. Now, external circumstances giving rise to business risk may influence the inherent risk. मतलब कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं दैट गिविंग राइज टू बिजनेस रिस्क, मींस उससे क्या होगा, इनहेरेंट रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लाइक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मेकिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट. कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी जिससे उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, causing इन्वेंटरी टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू बी ओवरस्टेटेड, कि वो अगर मान लो कि ऑब्सोलीट होगी तो उन्हें प्रोविजन बनाना होगा, उनकी एनआरवी डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा वहां पे, तो उनकी इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ेगा वहां पे. अगर वो नहीं कर पा रहे, नहीं किया उन्होंने, मतलब क्या पता मैनेजमेंट को पता ना हो वहां पे, ऑडिटर ने देख लिया वहां पे, तो इन दैट केस इन्वेंट्री विल बी ओवरस्टेटेड एंड दैट टू सर्टेन ग्रेट लेवल. Next, internal control, no matter how well designed and operated, can only reduce but not eliminate. क्यों इंटरनल कंट्रोल कितने भी वेल डिजाइन एंड ऑपरेटेड हो वहां पे, बट दैट कैन ओनली रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. वहां पे रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते. मींस ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो. वहां पे मतलब कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर्स, वो तो रहेंगे वहां पे, हो सकते हैं वहां पे. कंट्रोल्स बिंग सर्कमस्टांसेस बाय कोल्यूजन और इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, वहां पे कोल्यूजन हो सकता है वहां पे. नाउ matters which assist to enhance the effectiveness of audit procedures and its applications and reducing the possibility of auditor might select inappropriate audit procedures. वो कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं by adequate planning, मतलब प्लानिंग करता रहे वो थ्रू आउट ऑडिट. अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन भी मिल गई तो इन दैट केस आल्सो ही हैज टू डू द प्लानिंग. नाउ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ पर्सनल टू एंगेजमेंट टीम, जो पर्सन को हायर करे उसके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज हो वहां पे. एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करे. सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म किए, सुपरवाइजर रिव्यू करे जो उसने काम, मतलब उसकी टीम ने वर्क किया उसको रिव्यू करे वहां पे. नाउ लास्ट पॉइंट्स, अदर मैटर अफेक्टिंग द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि अदर मैटर्स क्या हो सकते हैं जो लिमिटेशंस और इफेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉड, पर्टिकुलर फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कल्यूजन, कि मतलब फ्रॉड हो सकते हैं वहां पे कि जो सीनियर मैनेजमेंट और वो कल्यूड करें वहां पे. बी पॉइंट, एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ आरपीटी, कि मतलब आरपीटी ट्रांजैक्शन हो सकती है वो आर्मलेंथ प्राइस पे है कि नहीं, ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट. लाइक फ्रॉड 240 डीलिंग विद एन एसए 550 with RPT, related party transaction, and occurrence of non-compliance with law and regulations, ये non-compliance law का है कि नहीं है, that is dealing with SA 250, and future event and condition that giving cause to entity to cease the going concern, and that is dealing with SA 570 now, going concern. Now last point, relevant SA identify the specific audit procedures to assist in mitigating the effect of inherent limitation. inherent limitation के रिस्क को reduce करने के लिए relevant SA बताएगा वहाँ पे. So we are done with essay 200 with full, and that the notes are from bare text only. Anything left? Vinay, can you explain the meaning on come on the page number 6? Page number 6, yeah. Explain the meaning of this, overlooking the unusual circumstances over generally when drawing the conclusion using inappropriate assumption. Okay. एक सेकंड, चलो मैं सेशन में लेते हैं कि देखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में अलर्ट करना है थ्रू आउट द ऑडिट. अब वो कैसे कर सकते हैं वहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि अनयूजुअल सर्कमस्टांस को कहीं ओवरलुक कर रहे हैं वहां पे, अनयूजुअल सर्कमस्टांस को अच्छी तरीके से ओवरलुक कर रहे हैं वहां पे. इससे क्या होगा, ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा वहां पे, जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं
ऑडिटर उसको अच्छे तरीके से केयरफुली चेक कर रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे वो अलर्ट है, वहाँ पे ओवरलुक प्रॉपरली कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, कि जब ऑडिट ऑब्जर्वेशन निकाल रहा है अपनी, कोई पॉइंट रख रहा है वहाँ पे, तो वो कैसा पॉइंट रख रहा है, मतलब कंक्लूजन कोई फाइनल अपना रीच करेगा वहाँ पे, तो अपना स्केप्टिसिज्म माइंड रखे ना वहाँ पे, मैनेजमेंट कह रही है कि ये चीज रख लो आप, वो ऑडिटर एग्री ना हो जाए वहाँ पे, मतलब माइंड अपना रखे, क्वेश्चनिंग माइंड वहाँ पे, ये चीज गलत हो सकती है वहाँ पे, कि जैसे मैनेजमेंट, ऑडिटर ने मांगा एग्रीमेंट दे दो मैनेजमेंट से, एंड मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड दैट, ऑडिटर को वहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा ना, कि अगर उसको भी वहाँ पे फिर भी डाउट आ रहा है वहाँ पे, तो दैट ही कैन क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम दैट पार्टी ऑल्सो, कि उनके पास एग्रीमेंट है कि नहीं है, कोई अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए उनको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट टू। एंड लास्ट पॉइंट, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट असम्पशन इन डिटरमाइनिंग एंटी ऑफ, मतलब इनएप्रोप्रिएट अगर कोई असम्पशंस वो मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे, कि मैनेजमेंट अगर कोई इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस यूज कर रही है वहाँ पे, तो प्रॉपर्ली वहाँ पे केयरफुल करे वहाँ पे, एंटी उसको कैसे डिसाइड करना है वहाँ पे आगे। Got it? Yes, I got it. Any more? No. All the things covered? Yes. You have prepared the notes on the from the where text. Yeah, these are from bare text. So okay, let's end this session here firstly.